Good morning, all. Myself, Dr. Rajendra Prasad Sharma, Associate Professor in Mahatma Gandhi Nursing College. So we have discussed about the practice of psychiatric nursing review. So we have discussed about the practice of psychiatric nursing review. Firstly, we have to review our first point to provide qualitative care of psychiatric client and to fulfill professional obligation toward the psychiatric care in 1973. The Division of Psychiatric and Mental Health Nursing Practice revised the standard of psychiatric nursing in two types. There are the two types: professional practice standard and professional performance standards. Firstly, we have to discuss about the professional practice standard. So, professional practice standards. First one, we have to discuss about the theories. You know about the theories. So many theories are applicable for in our theoretical area in our psychiatric nursing. So theories are the most important part in our professional practice standard. And theory were formulated application of relevant theories to explain phenomena concerned to nurse to provide basis for the intervention. So many theories are given by the so many theorists. So we have to implement our psychiatric nursing and upon our theory part. So we have to discuss about the so many theory like that, the Erik Erikson theory, like that the Maslow theory. So many theory are given by the psychologist or sociologist or psychiatrist. Second one is the data collection. Data collection is a part of our nursing area. Mainly this focus our problems in our area or in our society. The nurse continuously collect the data that are comprehensive, accurate and systematic. Data collection, you know about the some kind of research or some kind of theory part. So we have to collect the data according to the knowledge of the patient or knowledge of the nurses and like that. So data collection is the part of this professional practice standard. So effective interviewing, behavioral observation, physical and mental health assessment enable the nurse to reach sound conclusions and plan appropriate intervention with the client. So some kind of situations, some kind of data collections. So data collection are the effective interviewing behavioral observation. It's a kind. We have to collect the data by the interview or by the observation or by the physical examination, just like the correction. Just one is the assessment of the problem of the patient or of the just related to the conclusion of the our research part or our conclusion of the intervention of the part of the theoretical base or clinical practice. Third one, diagnosis. It's the part of this type of practice. The nurse utilize nursing diagnosis and standard classification of mental disorders to express conclusion supported by recorded assessment data and current scientific premises. Nursing logical basis for providing care rests on the reorganization and identification of those actual or potential health problems that are the scope of nursing practice. So we have collect the all information and then we have to arrange all information that we have to provide the potential and actual diagnosis of the patient, or just only the diagnosis is the treatment just related to the treatment of the patient or like that the हम उसका इलाज भी करते हैं और उसके डायग्नोसिस के हिसाब से हम उसको ट्रीट करना ये हमारा इम्पोर्टेंट है. विदाउट डायग्नोसिस वी कांट एबल टू ट्रीट और वी कांट एबल टू प्लान इंटरवेंशन ऑफ द प्रॉब्लम. प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड का फोर्थ जो टॉपिक पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम. और इसमें हम लोग जो हमारा आइडेंटिफिकेशन जस्ट लाइक द क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या जो हमने अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस के बाद में हमको क्या क्या करना है उससे रिलेटेड है. ठीक है. द क्लिनिकल नर्स हैज़ टू प्लान इंडिविजुअल
holistic interventions by identifying expected outcome through implementing nursing care activities to attain the fullest extent of their capabilities. It depends on the capability of the data and the diagnosis. It is related to this part, क्योंकि उसके बिना हम जो आउटकम है हमारा, जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं और जिसमें हमको पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को जो हमको इंटरवेंशन देना है, उसमें जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन नर्सिंग केयर है, उस एक्टिविटीज़ को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारा पीछे के जो हमारे डायग्नोसिस और उसके अलावा जो हमारा डाटा कलेक्शन है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, प्रोफेशनल प्रैक्टिस planning. Planning is the part of this conditions, like that practice standards. Planning is the part nursing care plan with a specific goal intervention, delineating nursing action unique to each client's need. Every individual have to very problem to like that जो situations हैं वो affected हैं, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती हैं सिचुएशंस, और उस सिचुएशन के हिसाब से हमको प्लानिंग करनी है। सो नर्सिंग केयर प्लान इज यूज टू गाइड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन एंड इफेक्टिव अचीव टू डिजायर आउटकम। जो नर्सिंग केयर प्लान जो हम बनाते हैं, जो हमको बनाना है या हम इसको बनाने के लिए हमको गाइड करते हैं या हमारे द्वारा गाइड किया जाता है, जस्ट लाइक द थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, थेराप्यूटिकली इंटरवेंशन ऑफ द पेशेंट, लाइक दैट द। सो जिसके कारण से हमको इफेक्टिव जो हमारा ट्रीटमेंट है या आउटकम है या जो हमारा इवैल्यूएशन है वो हो सके। नेक्स्ट, प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। 6 पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थेराप्यूटिक इंटरवेंशन. Psychotherapeutic interventions, just when the psychotherapeutic, what are the therapy we have to given this type of situations, or we have to discuss about last point के vary करती है problem person to person. So we have to, what are the therapeutic intervention we have to given to the patient. And next one, the health teaching activities of ADL activities or somatic therapies. What are the somatic therapy, just like the ECT or other therapy we have to given such type of patient or such type of conditions जो हमको प्रैक्टिस के अंदर हमको असेसमेंट किया, हमने कलेक्ट किया डाटा। थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू नर्स पेशेंट रिलेशनशिप और IPR इंटरवेंशन जो हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जस्ट ओनली द वी हैव टू रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट एंड वी हैव टू गिवन बाई nurse therapeutic environment we have to maintain. And next, then the psychotherapy. Psychotherapy is the part of therapy. What are the psychotherapy we have to given and such type of conditions, or we have to implement according to the patient conditions. Next, 7 point, evaluation. The nurse evaluation client response to nursing actions in order to revise the database, nursing diagnosis and nursing care plan. Evaluation is a part of nursing practice. We have to discuss about the according to firstly, ठीक है, just only the theory, data collection and implementation, evaluation, like that the, और डिपेंड करता है हमारे हम किस हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट किया है, और इस इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम जो रेस्पॉन्स आता है पेशेंट का, उस रेस्पॉन्स को हम एवालुएट करते हैं और उसके हिसाब से हमारे जो भी हमारा रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है, वो मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। उसके हिसाब से हम आगे का प्लान करते हैं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. Lastly, we have discussed about the professional practice standards, and secondly, we have to discuss about the professional performance standards. So, firstly, quality assurance and peer review. Quality assurance is a part of our life or in our nursing department. The nurse participate in peer review and other means to evaluate, assure quality of nursing care provide for client. जो क्वालिटी ऑफ केयर हमको प्रोवाइड करनी है या क्वालिटी ऑफ केयर जो हम पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस, जो हमको हमारी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो हमारे परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंसली हम लोग यहाँ पे पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराते हैं. ओके, थैंक यू.